Prime Minister Narendra Modi has reached Bharat Mandapam for BJP's National Council meeting. This is a two-day meeting where nearly 11,500 BJP delegates drawn from across the country has now commenced. The party's top brass, of course, led by PM Modi, has arrived. You can of course see visuals on your screens towards the right. These are live visuals. Home Minister Amit Shah is there, Defence Minister Rajnath Singh, Party President JP Nadda are also there for this meeting. Of course, they will be outlining the BJP's campaign themes for the upcoming Lok Sabha elections, from its elected panchayat heads to district presidents as well as union ministers, chief ministers. The BJP's National Council meeting is going to be the ruling party's biggest organizational get-together in recent times. Of course, this exercise is all aimed at galvanizing its cadre for the upcoming Lok Sabha polls. Of course, their goal is 400 par this time round. They have delivered on their key promises of the abrogation of Article 370 as well as the building of the Ram Mandir. All eyes on what resolutions they will pass. My colleague Akshat Gupta is covering this from the ground at Bharat Mandapam. He was of course there with us an hour back, showing the excitement, elation, enthusiasm of all the BJP delegates on the ground. Akshat, over to you. What is taking place right now? Very nicely stated. Now the poll buzzer has been sounded, and Apki Baar 400 par is the main slogan to breach the 400 mark out of the 533 Lok Sabha seats. And if I just try to show you some visuals also out here, then you can see, the excitement, the enthusiasm is still there on the ground, because now the Prime Minister Narendra Modi has also reached the Bharat Mandapam, and of course, he is visiting the Viksit Bharat Sankal exhibition. It basically showcases the schemes which have been organized by BJP in the last 10 years and how they have acted as a catalyst for the common public. Well, that will also be put forward in the 2024 Lok Sabha election. And here, of course, you can see, how different leaders, be it the district, state, or national leaders, have started arriving here, and many have arrived because the National Council meeting is, and it will be basically preceded by the national officers barrel meeting, who will be outlining the party's agenda, the campaign themes, as you also stated, and it's slated to start in the afternoon, and they will finalize some of the key agenda items of the convention. And if I just tell you that BJP National President JP Nadda is also going to grade the meeting with his address, and then a validate display address by the Prime Minister Narendra Modi is going to be held tomorrow. Indeed, there seems to be a connectivity issue at your end, Akshat. I will just get back to you. But of course, as you were telling our viewers, Party President JP Nadda is all set to address the delegates on the ground. The final address today, of course, will be made by Prime Minister Modi himself. And it seems that your connection is a little more stable as of now. You've also spoken to some of the key leaders. What do they have to say? What are your takeaways from your conversations with them? Yes, when I spoke to the leaders, of course, they are saying, basically the schemes, the achievements which they have achieved in the last 10 years is going to be on the agenda. It's there in the fray, and how to actually, push them to the public. Basically, that's going to be on the agenda, because be it the Article 370 or the conjugation of the Ram Temple, well, a long-awaited dream for millions of people, and very importantly, the Women's Reservation Bill, which was passed in the special session of the Parliament. So that's going to be the key agenda of the party. And of course, the poll plank of the BJP is Modi ki guarantee, which is actually sounding everywhere. It's basically echoing and reverberating here
in Bharat Mandapam also. So the meeting will be very crucial in a sense as to what actually comes out of it and what proposals are passed ahead of the Lok Sabha elections. Indeed, of course, all eyes on what proposals will in fact be agreed upon ahead of the upcoming Lok Sabha polls. Akshit, I would like to thank you for joining us, giving us all those details. We will keep an eye out on all of these live developments that are flashing on the left side of your screens, viewers. Meanwhile, Akshit and my other colleague Manohar have also spoken to some of the Bharatiya Janata Party leaders such as Tejasvi Surya, Rajkumar Chahar, as well as Subhash Barala. Meanwhile, let's take a look at these conversations. राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, हम सब उत्सुक हैं और अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का और सबका मार्गदर्शन के लिए हम सब उत्सुक हैं। और राहुल गांधी की यात्रा काशी पहुंच रही है और वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग व्यापारी हैं और हम पुजारी हैं। तेजस्वी जी किस तरह से दुकान के बाद वो जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, दुकान में व्यापार कौन कर रहे हैं, देश को इतने साल में कौन भेजे हैं, पूरा देश जानता है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। क्या कुछ कोर एजेंडा रहने वाला है उसके बारे में बताइए। देखिए, अधिवेशन की अभी योजना हम लोग आए हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ भारत मंडपम में अभी ये अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन। हम सब कार्यकर्ता बड़े उल्लासित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं और एक नई ऊर्जा के साथ लौट के वापस अपने क्षेत्रों में जाएंगे सब कार्यकर्ता और मोदी जी की तीसरी बार की प्रचंड बहुमत की सरकार बने, इसके लिए कार्य करेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो। मैं समझता हूँ वो आंदोलन नहीं, एक क्षेत्र के किसानों का एक जत्था है, वो आया है और उनसे बातचीत करने के लिए, सकारात्मक बातचीत करने के लिए मोदी जी की सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल जी, हमारे अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी स्वयं किसानों के बीच में जाकर, चंडीगढ़ जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से उनके सुझाव पर विचार करेगी और उनको मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना बीजेपी के नेता को, जो 2 दिन का अधिवेशन दिल्ली में होने वाला है भारत मंडपम में, जो एक की मीट है जिसमें कई कोर एजेंडास पर बात होने वाली है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी। बराला जी, सबसे पहले तो आपने राज्यसभा का नामांकन भरा और क्योंकि अब कोई और नहीं है दौड़ में तो स्पष्ट है चुनाव की शायद जरूरत ही ना पड़े और ऐसे में आप राज्यसभा में जा रहे हैं, उसके लिए तो आपको सबसे बड़ी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से पार्टी के नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका इस बात के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझको इस योग्य समझा कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपरी सदन में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी और देश की सेवा करने का मुझे मौका दिया। विधानसभा के आप सदस्य रहे, विभिन्न कमेटियों में चेयरमैन रहे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा में रहे, कई जिम्मेदारियां निभाई। राज्यसभा को लेकर के अब किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में, और खासकर जब हम हरियाणा की बात करते हैं राज्यसभा में किस तरीके से? देखिए, एक नया काम पहली बार ये मिला है। निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार की भी जिम्मेवारियां राज्यसभा के सांसद के नाते होती हैं, वो जिम्मेवारियों को समझ करके कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का, किसान कल्याण का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरा करने में अपना सहयोग देश को, हरियाणा के जितने भी इस प्रकार के मुद्दे राज्यसभा के लायक होंगे, जिनको वहाँ उठा करके प्रदेश का, देश का भला हो सकता है, वो भी मेरा प्रयास रहेगा इस प्रकार के मुद्दे उठाने का। सर, अब बात करते हैं जो आज प्रमुख बैठक, आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, अधिवेशन, भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। किस तरीके से देखते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन, किन किन मुद्दों को लेकर के रहेगा? लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो हमारा अधिवेशन है, ये अधिवेशन 2 दिन का अधिवेशन आज से शुरू होगा और इसके अंदर आगामी जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के अंदर जाए और देश की जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, इसकी जो उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा होगी, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा होगी। एक इस प्रकार का सॉलिड एक रोड मैप इस बैठक से निकल करके आएगा, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। एनडीए 400 पार, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में ही जब वो रेवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एनडीए 405, उन्होंने 2013 की बात याद दिलाई कि जब वो यहाँ पर आए थे 200। For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.